Good afternoon. Good to be with you again in the Basic Bible Knowledge Workshop, the Hindi language. We are dealing with the subject of whether a Christian or not a Christian. That really boils down to, there's two families in the whole universe, the family of God and the family that's not of God. आज रात के हम देखेंगे कि जो ईसाई है और जो ईसाई नहीं है, ये प्रश्न अपने आप से पूछो कि आप ईसाई हैं कि ईसाई नहीं हैं। ये दुनिया में परमेश्वर का संतान कौन है और शैतान की भी संतान कौन है इस दुनिया में। Of complete and utter importance is that you take Christ as your Savior, and He's not to be added to what you have, but He is to be taken instead of what you have. तो बोले कि यीशु मसीह को अपनाना चाहिए, इन्हें की जोन सी हमको लगे है मूर्ति उर्ति और जोन सी हम अच्छा काम पे अपना विश्वास करते हैं, उसके साथ यीशु मसीह को भी अपनाओ। नहीं, यीशु मसीह या कुछ नहीं, यीशु मसीह के मांगो अपनाओ, खाली यीशु मसीह को। The Bible says in Revelation chapter 19, and the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. And these both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Revelation 19:20 में बताया कि जो शैतान और जो शैतानी हरकतें करते हैं और जो शैतान के जो झूठे प्रॉफिट लोन हैं, उनको आग कुंड में फेंक दिया जाएगा। The Bible says in Revelation 20 verse 10, and the devil that deceived them was cast in the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Revelation 20:10 में बताया कि जो शैतान है, जो सबको भड़काते थे, उन्हें आग कुंड में फेंक दिया जाएगा, जहां वो जलेंगे दिन और रात। Now you can say, well, I'll just wait and see all you want to, but you'll die and you'll go to hell. बताया जब तुम बोलेगा हम नहीं, अभी हम वेट करेगा, अभी हम समय है हमारा पास, बोले नहीं, जब तुम मर जाओगे तब तुम जाके जरेगा नरक में। I'm a missionary up in Papua New Guinea, and the villagers, they all gather around somebody that's dying, and they'll house cry, and they'll house cry, and they'll house cry, and they'll weep and cry, and they work themselves up in such a state that they'll cry for days if the person is dying and won't die right away. They'll cry for days to cover up the sound of that person dying and kicking and screaming about the fire so it doesn't traumatize the infants and little kids and old people. तो बताया जब जो जगह के पापुआ न्यू गिनी में मिशनरी है, मिशनरी बन के काम कर रहे हैं वहाँ पीपल उनसे पापुआ न्यू गिनी में, वहाँ पे जब भी कोई मरे हैं तब बोले कि सब कोई आए कि इकट्ठा होकर रोने और गाने लगते हैं, और इतना रोते हैं कि जोर रोते हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान मरे नहीं है, मरेला है, बीमार है, रोए है, इरकम रोए कि ताकि जो इंसान मरे है वहाँ पे कभी चिल्लाए, बोले हम जरता है, मरेला है, हम जरता है, तो इन्होंने सब कोई रोए, इतना जोर रोए कि उसकी आवाज नहीं सुनाओगे। 2 Peter 2:4, for if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. 1 Corinthians 6:3, know you not that we should judge angels, how much more things that pertain to this life. 2 Peter 2:4 और 1 Corinthians 6:3 में बोले हैं कि कैसे स्वर्ग दूतों जो पाप कर बैठे थे, उन्हें परमेश्वर आग कुंड में फेंका है। When I tell about the story about those people in Papua New Guinea that are not dying right, your people are not dying right. You know your people are not dying right. You've been with them when they're kicking and screaming about the fire. Doesn't that tell you that you need to do something about your eternal soul so that you don't go to hell like they do? बोले कि जब इंसान मरे है, तुम भी जानता है कि कितना जन तुम्हारा परिवार ने तो कोई मर गया होगा, अब जानता है कि अब जा रहा उसके खटिया पे, जब वो मरत रहा तब वो चिल्लाता रहा कि बोलता रहा कि आग में जल रहा हूँ, तब बोले कि आप सोचने लगे कि आप मरेंगे तो आप कहाँ जाएंगे। The Bible says in Romans 2:5 and 6, but after thy hardness
An impenitent heart treasures up unto thyself wrath against the day of wrath, and revelation of the righteous judgment of God, who will render to every man according to his deeds. परमेश्वर रोमन्स 2:5 और 6 में कहता है कि परमेश्वर जो जो कठोर करे अपन दिल उन लोगों के सबके न्याय करी. Daniel talks about this in 12:2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. डेनियल 12:2 में बताया परमेश्वर की अंत दिन में जो जन मुर्दों जागेंगे और जो कोई स्वर्ग जाएंगे अनंत जीवन में और कोई नरक जाएंगे अनंत मौत में. The Bible says in John 5:28, marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. जॉन 5:28-29 में यीशु ने कहा है कि बोले कि चमत्कार ना हो, ये चमत्कार नहीं हो, चौको नहीं, सब जो तुम्हें बताता है कि समय आएगा जो कोई धरती में है मरा वो जीवित जी उठेंगे और कोई जाए स्वर्ग में और कोई जाए नरक में. I noticed dogs going crazy and various sounds and everything going on here. In New Guinea, we were given an invitation one time, people to get saved, and I heard in the distance, and it came closer and closer and died right at the front door of the church, right when I was trying to get people saved. You understand that there's somebody pulling against you, and they don't want you to come to Christ, they want you to die and go to hell and be deceived. बोले कि जब वो पपनिक में प्रचार करता रहा एक दिन, तब वहाँ पे बोले कि कुत्ता आए कि ऐसे करके एक मर गई. तब बोले वेलकम, बोले जब बताता रहा यीशु मसीह के बारे में बताता ताकि इंसान बच सके नरक से. वो टाइम तब वो टाइम बोले कि कितना देर टाइम पीपल मांगे डिस्टर्ब करे, चीज हुए सब डिस्टर्ब करे, मांगे पीछे खींचे आपके, नहीं मांगे कि आप बचो नरक से. If I could somehow impress upon you to be saved, I get on my knees and beg you, please come to Christ. You have a Baptist preacher on his knees begging you to come to Christ. There's an eternal damnation waiting those that would take anything but Jesus Christ's blood for their salvation. बोले सकता अपन घुटना पे ठेक के तुमसे बोले कि यीशु मसीह को अपना लो यीशु मसीह के. तुम नहीं मानता कि नरक मर के जाओ, अपना लो यीशु मसीह को. The Bible says in John 8:44, ye are of your father the devil. You notice he has children. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. जॉन 8:44 में बताया कि यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारा पिता शैतान है. The Bible says right there in Matthew 25:41, then shall they say unto them that are on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. तब बताया बोले कि यीशु मसीह को जन के बताई बोले कि तुम जाओ नरक में जाओ, परंतु ये नरक तुम्हारे लिए नहीं मैं तैयार किया था, मैं तैयार ये नरक किया था शैतान के लिए. Very interesting about that verse of Scripture. He's the father of lies, and he's the father of liars. He originates the falsehood, and he keeps his children working falsehood like that. He's the father of the very thing that's deceiving people to take them to hell.